audit working papers and common issues. So today's agenda is that Mr. Adnan will be delivering a 15 minutes lecture on effective audit working papers. Then myself, Syed Muzammil Ali, will be delivering a lecture on the common observations. And after our discussion, we will be open the floor to all of you guys, and you can ask the questions then. It's an open platform for all of you guys. Meanwhile, if you have any questions during our presentations, you can just write it in the chat. We will see your question in the chat and then answer you. So now I will introduce Mr. Adnan Mahmood Khan. So Mr. Adnan Mahmood Khan is a finance and audit professional with extensive experience in audit, quality assurance, financial management, and regulatory compliance in both public and private sector. He is an associate member of ICAP and a fellow member of PIFA and an affiliate member of SIFA. He also holds a bachelor degree in commerce from Punjab University. Mr. Adnan began his career with EY Pakistan, gaining international exposure at EY Abu Dhabi and EY Kuwait. His diverse career spans multiple sectors such as manufacturing, banking, oil and gas, logistics, construction, and more, allowing him to develop a broad and in-depth understanding of various industries. He also served as an audit expert with the World Bank and the Auditor General of Pakistan for 7 years. A passionate academic, he has taught financial management and audit and authored various articles. As a recognized speaker and trainer, he delivers sessions on audit quality and compliance. He joined ICAP Quality Assurance Department in 2022 and having vast experience of conducting quality control reviews across Pakistan, currently serve as the audit quality senior manager, where he is responsible for overseeing the audit quality of firms, ensuring adherence to global standards and best practices. He is dedicated to improving the quality and integrity of audits across the profession. So I'll hand over the platform to Mr. Adnan. So Mr. Adnan, you have around 15 to 20 minutes to wrap up your session. Mr. Adnan, you are on mute. Thank you very much, Muzammil Bhai, for your kind words and the introduction. I'm really grateful. I welcome you all, the dear participants who shown interest in this webinar. And basically, when we conceived, me and my dear colleague, Mr. Muzammil, we conceived this idea. So we have a session, a very comprehensive and a quick session on working papers, audit working papers. Basically, it is closely linked with audit documentation. And then I will discuss with you the main concepts from the audit documentation, working papers, and the effective working papers. And then I will request my colleague, Mr. Muzammil, to discuss some common issues for you with you. And in the end, we will take your questions. And inshallah, then we will wrap up this session. So we begin with the name of Allah. And now we Mr. Adnan, you are not audible. Muzammil bhai, is it okay now? I Yeah. am audible from the start, not audible, or not now? Now is it Yeah, okay? not now. Yeah, Okay. you can I'm start going to from your start. presentation. You can Okay, start I'm from going your to start. presentation. Okay. Now, Muzammil bhai, please guide me. My presentation is okay now? Yes. Okay. So, Please make it slide share and then you can start. okay. Assalamu alaikum, dear Muzammil bhai. I'm really grateful for your kind words. I welcome all the participants. Now we are going to start with the presentation, effective audit working papers. I will discuss with you the audit documentation, the effective audit working papers, and then in the end,
Mr. Mazamil will discuss some common issues related with the working papers, and then we will take your questions and then wrap up the session. The main topic is basically the audit working papers. I'm going to start with the table of contents, and that is audit documentation. We will discuss the audit documentation, the working papers, their objective, and then we will move towards nature and purpose of audit documentation, and then we will discuss the additional purposes of audit documentation, and then the definitions from where we get the idea that the audit documentation and the working papers are the same thing, and some of the requirements like timely preparation of the audit documentation and documentation of audit procedures performed and audit evidence obtained. Basically, at the start of this presentation, I want to clarify you that all the audit procedures, all the audit evidence obtained, the audit procedures performed comes under the purview of the working papers, and then the form, content, and the extent of the audit documentation, and the then departure from a relevant requirement if there it is, and matter arising after the date of auditor's report. Then we will quickly discuss assembly of final audit file, and then it comes the last, the basically the heart of the presentation, the heart of the webinar is the effective audit working papers. So after discussing the table of the contents, the main points, basically, if we sum up the whole presentation before discussion in details, the ISA 230 deals with it. Okay, the ISA 230 deals with it, and the ISA 230 deals with the auditor responsibility to prepare audit documentation for an audit of financial statements. And in addition to this, the appendix of ISA 230 lists down other ISAs that contain specific documentation requirements and guidance. For example, if we talk about what are the documentation requirements with respect to the related parties, the specific standard will deal with the documentation requirements. Here we will discuss the framework, we will discuss the standard guidelines, the benchmark for the audit documentation for the effective working papers as well. The specific requirements of other ISAs do not limit the application of this ISA. So from here we conclude that every specific standard will cover the requirements, but this is basically the framework for the audit documentation. Any law or regulation may establish additional documentation requirements. So after this, the objective is very important. The objective of the auditor is to prepare the documentation that provides, very key point, important point, dear participants, sufficient and appropriate record of the basis of auditor's report. The first point, the key point. And the second point is evidence that the audit was planned and performed in accordance with ISAs and applicable legal and regulatory requirements. So we move to the next slide, and that is the nature and the purpose of the audit documentation. First, we discuss the objective and the audit documentation that meets the requirement of this ISA and the specific documentation requirements of other relevant ISAs provides. The first point is evidence of the auditor's basis for a conclusion about the achievement of the overall objectives of the auditor. And the second point is evidence that the audit was planned and performed in accordance with ISAs and applicable legal and regulatory requirements. So, documentation deals with the auditor's opinion, the conclusions, the audit objectives, whether it was planned and performed in accordance with the ISAs, all comes under the umbrella of audit documentation. So, what additional purposes of audit documentation? After discussing the audit documentation, something about the working papers, some additional purposes of audit documentation are as follows: assisting the engagement team to plan and perform the audit. You all are from the accounting and auditing profession, and you know and you have the experience. Working papers assist the engagement team. Just like our colleagues are assisting us, working papers assist the engagement team to plan and perform the audit. This is the very key point. The starting point is additional point, but it is important point as well. Assisting members of the engagement team
responsible for the supervision to direct and supervise the audit work and to discharge their review responsibilities in accordance with ISA 220, enabling the engagement team to be accountable for its work. So, very important point as well. Key point, to be accountable for its work, retaining a record of matters of continuing significance to future audits. We are keeping the record, enabling the conduct of the engagement quality reviews, other types of engagement reviews, and monitoring activities under the firm system of quality management, enabling the conduct of external inspections in accordance with the applicable legal, regulatory, or other requirements. So, after this slide and the objective, I I I'm I'm telling you that when I was working in EY, a slogan was there: whatever is not documented is not done. So documentation is very important, very important. So we are moving towards the next slide after the additional purposes of audit documentation, and that is definitions. Only three definitions, not so much. I just collected the key definitions. The first is audit documentation, the record of audit procedures performed. First is audit procedures performed, relevant audit evidence obtained, and conclusions the auditor reached. Three things: the audit procedures performed, relevant audit evidence obtained, and the conclusions reached. Terms such as working papers or work papers are also sometimes used. So interchangeably, we are used the working papers, the work papers for the audit evidence obtained, the audit procedures performed, and the conclusions reached, concluded by the auditor. And what is audit file? One or more folders or other storage media in physical, in electronic form containing the records that comprise the audit documentation for a specific engagement. And the third one is experienced auditor. I must say this is very important. An individual, whether internal or external to the firm, who has practical audit experience and a reasonable understanding of audit processes, ISAs, applicable legal and regulatory requirements, the business environment in which the entity operates, and auditing and financial reporting issues relevant to the entity industry. So, what are the requirements? After reading the definitions, what are the requirements? So now we will discuss the requirements and then we will quickly move towards what are the effective audit working papers, what are the effective working papers. We are just quickly refreshing, discussing ISA 230 audit documentation. The first thing is the auditor shall prepare audit documentation on a timely basis. Preparing sufficient and appropriate audit documentation on a timely basis helps to enhance the quality of audit and facilitates the effective review and evaluation of the audit evidence obtained and conclusions reached before the auditor's report is finalized. So the key point is the auditor should prepare, the auditor, the audit team, the engagement team should prepare the audit documentation on a timely basis. Documentation prepared after the audit work has been performed is likely to be less accurate, less credible than documentation prepared at that time such work is performed. Documentation of the audit procedures performed and audit evidence obtained. As we already discussed, as we already concluded, that what are the working papers, audit procedures, audit evidence, conclusions reached. The first point is form, content, and extent of audit documentation. The auditor shall prepare the audit documentation that is sufficient to enable an experienced auditor having new previous connection with the audit to understand. So we discussed experienced auditor. We know who is experienced auditor, having knowledge of the ISAs and the regulatory processes, legal processes, all the things.
The auditor shall prepare audit documentation that is sufficient to enable an experienced auditor having no previous connection with the audit to understand three things: the nature, timing, and extent of the audit procedures performed to comply with the ISAs and applicable legal and regulatory requirements. The second thing is the results of the audit procedures performed. Very important. The first is the audit procedures itself. And the second is the results of the audit procedures and the audit evidence obtained. And significant matters, the last but not the least, significant matters arising from during the audit, the conclusions reached thereon, and the significant professional judgments made in reaching those conclusions. Now we are moving towards the documentation of the audit procedures performed and audit evidence obtained, continued from the previous slide. In documenting the nature, timing, and extent of audit procedures performed, the auditor shall record. Basically, the auditor have to record the three things. Very important. The identifying characteristics of the specific items or matters tested. Only just ticking the work papers is not sufficient. Just ticking, just we performed, we write it down. No, it is not sufficient. It is not complete. We need to record the identifying characteristics of the specific items or matters tested. The second is who performed the audit work and the date such audit work was completed. And the last but not the least, who reviewed the audit work performed and the date and extent of such review. So three main things: identifying characteristics of the matters, who performed the audit work, who date of when the audit work was completed, and you reviewed the audit work and the extent of such reviews. So three things come under this ambit. The auditor shall document discussions, very important thing. The auditor shall document discussions of significant matters with management, those charged with governance, and others, including the nature of significant matters discussed and when and with whom the discussion took place. If the auditor identified information that is inconsistent with the auditor's final conclusions regarding a significant matter, the auditor shall document how the auditor addressed the inconsistency. I'm moving towards the next slide. I think some error is there. Just a minute. You are visible now, Mr. Adnan Bhai. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Malvi. Thank you very much. So, very important point is if there is a departure from a relevant requirement. If in exceptional circumstances, the auditor judges it necessary to depart from a relevant requirement in an ISA, the auditor shall document. So this is important. If there is a departure, the auditor shall document how the alternative audit procedures performed achieve the aim of that requirement and the reasons for the departure. The requirement of the ISAs are designed to enable the auditor to achieve the objective specified in the ISAs and thereby the overall objectives of the auditor. Accordingly, other than in exceptional circumstances, the ISAs call for compliance with each requirement that is relevant in the circumstances of the audit. So the documentation requirement applies only to the requirements that are relevant in the circumstances. I have two examples for you. A requirement is not relevant only in the cases where the entire ISA is not relevant. For example, if an entity does not have an internal audit function, nothing in ISA 610 is relevant, or the requirement is conditional and the condition does not exist. For example, the requirement to modify the auditor's opinion whether there is an inability to obtain sufficient appropriate audit evidence and there is no such inability.
So I'm moving towards the next slide. Matter arising after the date of the auditor's report. If in exceptional circumstances, the auditor performs new or additional audit procedures or draws new conclusions after the date of the auditor's report. These are the circumstances which are very rare, but standard guides us in relation to this. If in exceptional circumstances the auditor performs new or additional audit procedures or draws new conclusions after the date of the auditor's report, the auditor shall document the circumstances encountered, the new or additional audit procedures performed, audit evidence obtained, and the conclusions reached and their effect on the auditor's report. When and by whom the resulting changes to the audit documentations were made and reviewed. For examples of exceptional circumstances include facts which become known to the auditor after the date of the auditor's report, but which existed at that date and which, if known at that date, might have caused the financial statements to be amended or the auditor to modify the opinion, important point, in the auditor's report. So the resulting changes to the audit documentation are reviewed in accordance with the review responsibilities set out in ISA 220. Assembly of the final audit file. The last concept, the last guidance from the standard, then we will quickly move towards the what are effective audit working papers. And I infer all the 6 or 7 types of effective working papers from this standard as well, only from this standard. The auditor shall assemble the audit file, audit documentation in an audit file and complete the administrative process. Very key point, the punchline, the heart of this segment, and complete the administrative process, only administrative process of assembling the final audit file on a timely basis after the date of the auditor's report. After the assembly of the final audit file has been completed, the auditor shall not delete or discard. Very important point. After the assembly, the auditor shall not delete or discard audit documentation of any nature before the end of its retention period. In circumstances other than those envisaged in paragraph 13, matters arising after the date of auditor's report, as we already discussed, where the auditor finds it necessary documentation or add new documentation after assembly of the final audit file has been completed, the auditor shall, regardless of the nature of the modification or additions, document the specific reasons for making them and when and by whom they were made and reviewed. Very important point. And ISQM 1 in this regard, or any national requirements that are at least as demanding, require firms system of quality management to establish a quality objective and that addresses assembly of engagement documentation on a timely basis after the date of the engagement reports. An appropriate time limit within which to complete the assembly of this administrative work, administrative processes of the audit file is ordinarily not more than 60 days after the date of the auditor's report. So these were the main points. I'm now moving towards what are the effective audit working papers. Just give me a minute. Mazamalbi, is it visible? Yes, Adnan Bhai, it is visible now. Okay. So after discussing the what is audit documentation, what are the audit working papers, now I will just take your next only 5 to 6 minutes, and then I will hand over, I will request Mr. Muzammil to discuss the common issues. So for the affecting
working papers, and I infer all the characteristics, or you can say the attributes, from the standard ISO 230. The first, the very important thing is for the affecting working audit papers, and we know the audit working papers are contains the audit procedures, the audit evidence, the conclusions, the significant matters, any departure, any significant matters, all the documentation related to these. So the audit working papers must be clear and understandable. They should be prepared so that the experienced auditor, we discussed in the definitions, having knowledge of the standards, having knowledge of the legal or regulatory requirements, having knowledge of the ISAs, IFRS, they should be prepared so that an experienced auditor with no previous connection to the audit can understand what work was done, what evidence was obtained, and what conclusions were reached. And a very simple example for you, a revenue testing schedule includes invoice numbers, amounts, tick marks, and the work done, all of that. Another auditor can immediately understand which invoices were tested and the results. Okay, so the first attribute for the effective audit working paper is they must be clear and understandable. And the second is complete and sufficient. They must contain in they must contain enough information to support the auditor's report and conclusions. Enough information, the sufficient information. For example, a receivable working paper that include customer balances, confirmation results, and the auditor's conclusion. Or another example is a bank reconciliation schedule showing the bank statement balance, cash book balance, reconciling items, the working on the reconciling items, the auditor's verification steps. This allows anyone reviewing the file to see that cash or bank was properly stated. So now I'm moving towards the next slide. The audit working papers must be relevant and focused, clear, understandable, complete, sufficient. After that, the audit working papers must be relevant and focused. Only matters that are significant to the audit should be documented. Significant, material, unnecessary details should be avoided. Documenting judgments on impairment, but not every minor recalculation. We can document the judgments, we can document the details, but not the minor recalculations. Document management judgment for warranty provision adjustments, but not document every routine invoice recalculation. Saves time and focuses on significant areas. We have limited time, so we have to invest this time for the significant, for the material, for the major areas. They must be prepared on a timely basis. Audit working papers should be prepared as the audit work is performed, not after completion. The key point is when the work is performed, when the audit is going on, not after completion. So when we discussed about the final assembly, we discussed the administrative task we can perform, but not the main task, main audit procedures. Documenting inventory count results immediately after the attendance, immediately after the stock count, what is obsolete, what are the issues in the inventories, we must document on time. Recording physical inventory counts on the day of the audit rather than a week later ensures accuracy. Immediate documentation avoids forgetting discrepancies or procedures. And the fifth point is the properly documents working papers must be properly structured and organized. Affecting working papers are properly indexed, cross-referenced, referenced, logically filed. Example, revenue testing working paper cross-reference to the risk assessment documentation. As you know, revenue is normally is high risk area. So at the planning stage, if we rate it as a high or medium or moderate, we must link it this with the at the execution stage of the revenue. So we must link it with the risk assessment documentation. So it must be linked. Revenue testing schedules are cross-referenced to the risk assessment documentation for revenue recognition. Helps a reviewer trace the audit trail quickly. So now we are moving towards the
next area, and that is evidence of supervision and review. They should clearly show who performed the work and when, who reviewed the work and when. Example, audit schedule signed by the preparer and reviewer with dates. Example, trade receivable testing schedule signed by the junior auditor and reviewed by the manager on the same day. Provides clear evidence of supervision. And the next is documentation of the significant matters and judgments. Effective working papers document significant issues, audit procedures performed, professional judgments applied, final conclusions. Example, a memo explaining why management estimate for a provision was accepted. Another example is a memo explaining why a slow moving inventory item was written down to net realizable value. Going concern assessment, the related documentation, the projections, how management cash flow forecast supports continuity for 12 months. And the next is very last slides of my effective working papers, examples of affecting audit working paper. This list is not exhaustive. Just I'm sharing with you some of the working papers: audit planning memorandum, risk assessment matrix, internal control evaluation checklist, substantive details, schedules, bank confirmation letters, inventory count sheets, and analytical review working papers, going concern assessment, summary of misstatements, audit completion memorandum. Why effective audit working papers are important? Effective working papers are important because they support the auditor's opinion, demonstrate compliance with ISAs, facilitate review, supervision, and inspections, provide legal and professional protection, enhance quality audit, enhance the quality of audit. Conclusion, the last slide. Effective audit working papers are those audit documents that are clear, that are complete, relevant, timely, well organized, and provide sufficient evidence to support the auditor's opinion. That's why effective audit working papers are the backbone of a high quality audit. So I just sum up with the permission of Mr. Mazamil, my colleague, just sum up within a 1 minute that we discussed in this first part of the webinar the relevant ISA for the audit documentation, and what we discussed, the audit documentation, the working papers are the basically. Muzamil bhai, do you hear me? Yes, yes, Adnan bhai. Okay, okay. So what we discussed, the working papers are basically the audit procedures, the audit evidence obtained, and the conclusions. And in the end, we discussed the attributes of the audit working papers. So thank you very much, dear participants. Now I am moving towards the second part because this webinar consists of three parts. The first part is for the working papers. The second part is the common issues with the working papers, the common issues, which will be discussed, Mr. Mazamil. And the third part, we will take up your questions. So now I'm going to introduce my very respected, my dear colleague, Mr. Mazamil. Mr. Mazamil is a very passionate chartered accountant, very experienced senior chartered accountant, senior member ICAB. He is a very good and seasoned mentor and teacher as well, and teaching at a corporate levels. And he is certified director. And now he is going to give you the main gist of the common issues. So, Mazamil bhai, over to you. Thank you, Adnan bhai. First of all, your presentation was indeed very beautiful. And you know that the common observations are linked with the effective audit working papers. So can you let me know whether my screen is visible to you? Muzamil bhai, your screen is visible. All is okay. Okay, perfect. Perfect. Assalamu alaikum, dear participants. I also want to thank you to present this webinar, to attend this webinar. So most of you, I know that are CA finalist students or working in the firms. So it is important for you guys to know that how to prepare an effective audit working papers, because as an article trainee, it is your job to do or to visit firms, to visit clients, and to prepare the audit working papers.
Now the observations are linked with the working papers. Okay. So now, as you all know, that our audit has three stages. Number one is the planning stage, number two is the execution stage, and number three is the completion stage. So I will let you know the common observations within these stage. Now, if we talk about the reporting, so you know that the first issue is a going concern issue. For example, you visit to a client and you ask from them that please give me your financial statements. When you review the financial statements, you came across to know that this company is having losses, the company's liabilities exceeding the current assets, that covenants breached. So in that case, it is your duty to ask from the management either they perform an evaluation of going concern. Those evaluation must be properly documented in the audit file. And if you found necessary that these indicators resulting in the material uncertainty, so all of you should document those in the audit working papers, and in the audit report give a paragraph with the name material uncertainty relating to going concern. Now, the second issue is that, for example, you visit to a client and you saw that they have given the 5 to 6 qualifications. Now it is your duty to judge whether these 5 to 6 qualifications will result in an adverse opinion, or whether these 5 to 6 qualifications will result in the audit report's qualification. So it is your duty. It is your duty to see that what are the reasons for the issue, whether the departure from the ISAs are material or pervasive, whether it is an inability. So all of those should be properly documented in an audit file. Now it's a common issue. See, if an audit report was signed by a previous year auditor, it is mandatory for an existing auditor to give an other matter paragraph in audit report. If the last year was audited by another auditor and this year is auditing by the new auditor, so in the audit report you need to mention the other meta paragraph. If it is not there, then it is a major observation. Now CAM, again, CAM is very important. You need to understand what is CAM. So CAM is applicable for listed entities. In majority of the cases, we see that the CAM is applicable on the entity and the entity does not disclose the CAM. And if they disclose the CAM, the disclosure was not appropriate. So you need to document all the key audit matters in the working paper file clearly. Now I move forward to the planning and risk assessment. Now, dear participants, you all are aware that ISA 315 is revised. So you need to clearly document the inherent risk factors, which FSLI are significant, which FSLI are not significant. But in majority of the cases, audit team fails to document those clearly. It's a major deviation and departure from the auditing standards. Again, the management override of controls and revenue recognition, ISA 240. So around common circumstances, we came across to know that the documentation of ISA 240 are not available in the audit working paper file. In the audit working paper file, there has been no fraud risk factors documentation. There has been no fraud risk inquiry. It is mandatory for all of you that when if you are performing an audit risk inquiry or the fraud risk inquiry, it should be properly documented and properly reviewed by the senior member. Other thing is audit materiality. See, in audit materiality, the benchmark are not properly documented. For example, you are choosing profit before tax and you are choosing a benchmark percentage of 15%. It's outside the range. It should be between 5 to 10%. But if you perform the professional judgment and select a benchmark 15%, it should be properly documented. For example, the best benchmark for a materiality is revenue, but you have calculated the materiality on asset side. Again, it should be documented why you calculated on the revenue side, not on the asset side. Now, another thing is the reassessment. For example, you calculate a materiality at planning stage. It is quite different with the materiality at the final stage. So the reassessment of the materiality in performance overall set level should be properly documented at the planning stage
as well as the completion stage. Now, independence issue. You all are aware that each and every audit team member, for example, either you or your team or your partner, when they are performing an audit, they must need to sign a independence confirmation. It's a must to do thing. While when we see the working papers, this independence issue observations are not attached. It is a common issue. So all of you must ensure that when you are doing an audit, you need to sign an independence. Now, general principles and responsibilities. Okay. So acceptance and continuous. Again, it is the requirement of ISQM as well as the quality management. When you are doing a complete review or a new review of a client, you must need to perform the acceptance check. You need to perform that whether it's a high risk client or a low risk client. You need to document whether your firm is having adequate resources. So this is a mandatory position. If we talk about that, if you are having an existing client, so you need to document a continuous procedure. So these two procedures are must. Now, again, it's a rotation of key audit partners. For example, it's a requirement that you need to rotate a partner after 5 years. And by any instance, the rotation of partners is not done after 5 years. It's a serious non-compliance. It's a serious non-compliance. So, so, so the quality management team of the firm must need to document each partner number of years, so they can easily identify when the rotation becomes due of the engagement partner. Again, communication with those charged with governance. So in majority of the cases, no documentation was available in the working papers regarding communication with those charged with governance. It is with accordance with ISA 260. Again, the common thing, there was no documentation in the audit file regarding the assessment made by the engagement team as to whether the entity was in compliance with laws and regulations. I must want to communicate all of you guys that on ACCA website there is an article with the name of NOCLER, non-compliance of laws and regulation. I want to say that all of you guys must have a read on this. It's just a one-page document, but I want all of you to have a read on those, because the consideration of laws and regulations are very important. There are certain laws which directly affect, and there are certain laws which indirectly affect, and the auditors maximum time fails to meet the requirement of this standard. So I want all of you participants to read an article with the name non-compliance of laws and regulation. It is presented on an ACCA website, NOCLER. Again, engagement letter. So in majority of the cases, engagement letter was not signed. One more thing, the audit planning has started before the signing of the engagement letter. Again, it's a problem. Engagement letter should be signed first, and the audit planning should be start later. So it's a mismatch. So you must ensure that the engagement letter that is correct. The engagement letter is signed by both the team, the audit team as well as the client team. Now again, I move forward to the audit evidence areas. My dear participants, the journal entry testing. Majority of the cases, majority of people do not know how to perform a journal entry testing. Again, it's a major non-compliance. If some of you has not performed a journal entry testing, it's a major non-compliance. It's a must-to-do procedure. All of you should document those journal entry testing appropriately. Again, the external confirmations. So, dear participants, in majority of the cases, if we talk about the legal and talk about the bank, so it's a must to do to receive an external confirmations. But for receivables, for payables, for a related party, once you send a confirmation, you didn't follow up or didn't perform an alternate procedures. So for example, if you send a confirmation to a related party and you didn't receive the confirmation, so you need to give them another reminder or follow-up. A follow-up documentation was missing in the audit file. Again, it is a non-compliance. And if after a follow-up you are not receiving the responses, then it is your responsibility to perform an alternate procedures. Again,
for in the documentation, when we see those alternate procedures are not properly documented. So this need to be ensured. Now, the complex estimates and auditors expert. My dear participants, if you are applying an auditor expert in majority of cases, for example in IS 19, so you need to have the engagement letter documented in the file. You need to have an assessment documented in the audit file. But again, this was missing. So insufficient documentation was observed in cases where complex accounting estimates, example, actuarial valuations, impairment testings were involved. Auditors failed to appropriately engage an expert or verify the independence, competence, objectivity of the expert as mandated by ISO 620. The lack of involvement and documentation could lead to an incorrect evaluation of complex areas such as provisions for employee benefits, valuation of asset at fair value, and asset impairment. So again, for the complex estimates, it is must to do to have a rigorous documentation available in the audit working paper file. Now, one more thing. So in Pakistan, if you see any financial statements under note 2, every company showing the estimates. Every company is showing the estimates. So just for your guidance, when you are performing an audit review, please ask from the management that these are the estimates disclosed in the financial statements and what procedures you have performed, and you need to challenge those assumptions of the management. Now, again, the inconsistent treatment of tax matters. So it's a very simple thing. Deferred tax working, prior tax working is sometimes not available in the audit working paper file. Or for example, when you are having another firm which providing you the tax matters, so you don't have the confirmation or tax position summary available in the file. So it's a serious observation. See, it's a tax matter, and tax matter is a serious observation. It must be properly documented. Now, ECL calculation, you are now very well aware that the ECL has been implemented in Pakistan since 2018. Okay. Now, and it's a must to do procedure. You need to document the probability of default. You need to document aging. You need to see the indicators. But again, it's a failure, and it's a failure that the audit working paper does not have a proper ECL working. So you need to ask from the client that please give us the proper ECL working, attach those working in the audit working paper. And if the working paper is not accurate or the ECL working is not accurate, then it's an observation and a material observation. Again, as Mr. Adnan Bhai told you about the subsequent event, see, you need to have a rigorous testing of a subsequent event. And this is also linked with IS-10, events after the reporting date. So you need to see that which events are adjusting, which are not adjusting. So it needs to be properly documented and disclosed in the working paper file. Now, loans and advances to related parties, again, it's a specific section 199 requirement. So you need to see a requirement of a Companies Act as well. Again, the contingent liabilities and legal provisions. Again, this is a subjective area. So when you have any contingency disclosed in the financial statements, it must be supported either by a lawyer or by a tax consultant. In majority of the cases, the financial statements disclose the contingencies, but when we ask from them that where this contingency comes from, they don't have any lawyer confirmation, they don't have any legal confirmation. So as an auditor, you must need to have a good look on all the observations. Please have a working paper in which you have all the observations either of legal or tax. Corroborate this with the confirmations of the lawyer or a tax department, and then assess whether contingency needs to be disclosed or whether provision needs to be made. Again, it's a very subjective area, very judgmental area, and if the documentation was not available, it's a major deficiency. Opening balances. You are all aware that when you are performing an opening balance audit, you need to review the prior auditor working papers, predecessor auditor working papers. Majority of the cases,
we see that you are auditing the very first time, but in the audit working paper, there has been no evidence that you review the opening balance paper of the predecessor auditor. There has been no evidence that you have sent the engagement letter or you have sent the clearance letter. It's a mandatory requirement, and a departure from this requirement results in a major deficiency. Inventory valuation existence. You need to test an NRV testing. You need to test a weighted average cost testing. But when we perform an audit, majority of the time we miss the valuation testing, we miss the NRV testing. So you need to make sure that all of those testing are available in the audit working paper file. Yes, again, the provisions are slow moving and obsolete inventory. Same thing as we discussed above, that when you have a provision, for example, another good thing, when you have the provisions, then you need to have an assessment of deferred tax as well. So sometimes the tax department will allow, sometimes the tax department will not allow. So you need to ensure that if you are doing any provision working, you also need to consider it for the deferred tax working as well. Lease accounting. My dear participants, now you know that since the IFRS 16, lease accounting has been changed significantly. So there has been no documentation of whether these leases are finance lease or or an operating lease. Now in after IFRS 16, under two circumstances, it should be an operating lease. The number one circumstance is a low value lease or a short term lease. There has been no documentation of a low value lease. There has been no documentation of a short term lease. There has been no documentation of the lease reassessment, lease modification, and failure to do so results in a major deficiency. Again, impairment testing of property, plant, and equipment, impairment testing of investments. So auditors frequently neglected to perform impairment test. It's a mandatory procedure. You must need to have an impairment test done for each and everything. Again, incorrect calculation of depreciation expense. Majority of the times, auditor did not perform an analytical procedures. So you need to perform an analytical procedure for depreciation expense. Again, additions and fixed assets and verification. For example, you have addition during the year and you have disposal during the year. And when we ask from the auditor, have you performed a testing? They say, no, we just perform a physical observation or we just perform a physical inspection. So my dear team, physical inspection does not negate the need of the additions testing and a disposal testing. So it must be done in the audit working papers. Yeah, again, the very major issue, incomplete documentation of cutoff procedures. My dear team, in sales, it's a must-to-do procedure for a cutoff. And also, when you're performing the unrecorded liability, you must need to have those things properly documented. Again, the revenue recognition 5 stages model does not being covered in the audit working papers. So you need to properly document the stages. You need to properly document the IFRS 15 working papers. Majority of the time, this IFRS 15 working paper is not updated. And if it is updated, it is not accurate and does not have a requirement of the international accounting standards. Again, the work in process and the valuation issue. My dear friend, this is applicable in the manufacturing entity. For example, if we talk about the manufacturing entity, so in manufacturing entity, you have the raw material, you have the finished goods, you have the work in process. Majority of the time, auditor will perform the audit procedures on the finished goods and auditor perform an audit procedures on the raw material. But the auditor did not perform a process in the work in process. And if you see the financial statements, work in process has been disclosed separately. So auditor need to perform the procedures on the work in process. Again, the testing of accruals and provisions. If you are if the company is performing or if the company is doing accruals and provisions as an auditor, you need to see and you need to ensure the completeness. Again, it's a very missing documentation majority of the times. The auditors frequently fail to perform adequate testing on the completeness and accuracy of accruals and provisions. It's a severe non-compliance.
Now, if we talk about the presentations and disclosures, for example, the previous slides, the deficiencies which I have covered is relating to the file level deficiencies, the audit file. Now I am talking about the financial statements level deficiency. Again, so several audit revealed non-compliance with key disclosures requirements under IFRS, IAS, including missing disclosures for financial statements. Now it's a guidance for you participants. In whichever firm you are doing your articles or you are having an employment, when you finalize any financial statements, please fill the disclosure checklist. Please, it is it is it is my request to all of you. If you are not filling a disclosure checklist, you will be missing the financial statements disclosure. And when you will missing the financial statements disclosure, it's a non-compliance and a severe non-compliance. So that's all from my side, Adnan bhai. Thank you very much, Mozammil Bhai, for such a comprehensive presentation and discussion on the common issues. And I'm really grateful. And I'm really grateful for all the participants uh, who spared some time for us for this webinar and who joined. And now I request my all the participants, if you have any question, any query regarding the common issues addressed by Mr. Mozambil, my colleague. And if you have any query regarding the working papers, you can ask from me, or we can address both the common issues or the effective audit working papers. So now for the next 10-15 minutes, we'll take your queries. It will be an honor if you can ask any question. You can unmute your mic and you can ask simply. Mr. Kashif, do you have any question? I think you are asking some question. Any participant? Yeah, so Asra, Adnan bhai, Asra has write in the chat. What are the Okay. procedures to be performed in case of loss of major client who contribute 70 to 80% of revenue? So, Asra, I just want to know that the 70 to 80% of revenue is the firm's revenue or what? Asra, you can please you Write in can the chat. unmute your mic. Okay. Yeah, Yeah, yeah. yeah. The question is in the chat. It's a client revenue. No, I didn't understand Asra question. For example, Asra, your firm, you are working in a firm and you are having 10 clients. So one of the client is giving you, for example, 7 million rupees, and you have 10 million rupees of revenue, and that 7 million rupee client move from your firm and change the auditor to some ABC firm. So is this your question, or you are saying that you are an auditor and you are auditing a client and the client has reduced its revenue to 70%? So what is actually your question? Asra, you can please unmute your mic and you can ask directly from Mr. Mazamil. Uh, okay. We have another question. We'll take the question of Asra as well. We have another question from Mr. Kashif. Kashif, your query, please. You can unmute and you can ask. I have a question from Muzammil. Will it still be a non-compliance if all the disclosures are appropriately disclosed, but we have not filled the disclosure list checklist? So it's a non-compliance, but it's not a significant non-compliance. It's a documentation non-compliance. If all the disclosures has been properly addressed in the financial statements, it is okay. You just need to fill the checklist and attach in the audit working paper. So it's a non-compliance, but the non-compliance is of low nature. Kashif, Okay, thank you so much. you have any other question, Mr. Kashif? Asra, can you just unmute your No, mic thank and you so much. Okay, okay. Thank you, Kashif. हेलो अस्सलाम वालेकुम सर. Walaikum assalam.
जी सर, मेरा सवाल ये था कि अगर हम किसी क्लाइंट पे जो है वो ऑडिट करने के लिए जाते हैं और उनका रेवेन्यू हमें पता चलता है कि उनका मेजर क्लाइंट जो है वो बैंकरप्ट हो गया है और उनका मेजर क्लाइंट जो है वो 70 to 80% उनका रेवेन्यू कंसिस्ट कर रहा है, तो इस हवाले से हमारे गोइंग कंसर्न के अंदर क्या प्रोसीजर हमें परफॉर्म करने होंगे? हाँ असरा, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन माशाल्लाह। नाउ मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपने जो है वो एक ऑडिट आप क्लाइंट पे गए, और लास्ट जब आप उस क्लाइंट के पास गए तो उसका रेवेन्यू फॉर एग्जांपल जो है वो 10 मिलियन रुपीस था। नाउ अब उसका जो रेवेन्यू है वो जो है वो फॉर एग्जांपल 3 मिलियन रुपीस है। इसका मतलब ये हुआ कि 70% का डाउनफॉल आ गया। और इसका डायरेक्ट मतलब ये हुआ कि आपका गोइंग कंसर्न का इंडिकेटर रेस हो चुका है। जब आपको गोइंग कंसर्न का इंडिकेटर रेस हो गया, तो अब आप मैनेजमेंट से जो है वो गोइंग कंसर्न की चेकलिस्ट प्रोवाइड करेंगे। आप मैनेजमेंट से मांगेंगे कि आप बताएं कि ये क्लाइंट आपका चले गया है, तो आप कितने सस्टेनेबल हैं कि आप इसके जाने के बाद भी किस लेवल तक, जिसे कहते हैं कि वो ऑपरेट करेंगे। आप क्लाइंट से असेसमेंट मांगेंगे। ये एक इंडिकेटर है। अगर क्लाइंट आपको असेसमेंट दे देता है, तो फिर आप उस असेसमेंट को इवेल्युएट करेंगे, चैलेंज करेंगे। और अगर क्लाइंट आपको असेसमेंट नहीं देता, तो फिर आप इसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक तरह की अनसर्टेनिटी बनाएंगे। ओके सर, जज़ाकल्लाह। सर मेरा एक और सवाल था जी बोलें। रिगार्डिंग ईसीएल, कि ये सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज़ के ऊपर ही इम्प्लाई करती है, यानी को ज़रूरी होता है कि वही जो है वो ईसीएल को जो है वो डिस्क्लोज़ करें, या जो आपकी प्राइवेट एंटिटीज़ होती हैं वो भी, उनको भी ज़रूरी होता है? देखो असरा, जहां तक बात रही ईसीएल की, तो फॉर ईसीएल इट इज अ मैंडेटरी प्रोसीजर फॉर ऑल, वेदर इट्स अ प्राइवेट वेदर इट्स अ लिस्टेड। लेकिन हाँ, अगर आप ईसीएल को कैम बनाएंगे, यानी की ऑडिट मैटर बनाएंगे, तो कैम जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल होता है लिस्टेड एंटिटी के लिए। तो जब भी लिस्टेड एंटिटी का ईसीएल कैम बन सकता है, तो कैम की एक अलग रिक्वायरमेंट है और ईसीएल की एक अलग रिक्वायरमेंट है। ईसीएल आपको परफॉर्म करना है लिस्टेड, अनलिस्टेड, प्राइवेट, पब्लिक, किसी के लिए भी। लेकिन अगर आप उस ईसीएल को की ऑडिट मैटर बनाना चाहते हैं, तो की ऑडिट मैटर्स चूंकि लिस्टेड एंटिटीज के लिए एप्लीकेबल है, तो आप वहां पे डिस्क्लोज करेंगे। ओके सर, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। Sir, can you please tell us about the retention period you have pointed out at some point in Adnan Mahmood? सर, कि हमारा रिटेंशन पीरियड जो होता है उसके लिए हमने वर्किंग पेपर जो होते हैं अपने रिटेन करने होते हैं, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि रिटेंशन पीरियड स्पेसिफाइड है कहीं या कोई पॉलिसी है उसके बारे में? थैंक यू। यस, रिसेंटली मिस्टर काशिफ, इसमें एक चेंज आई है, और इसमें मुजम्मिल भाई मुझे रिकन्फर्म भी कर देंगे। मुजम्मिल भाई, आप दोनों रिटेंशन पीरियड, आई थिंक इट वाज लाइक, फर्स्ट इट वाज हाँ लाइक 6 years एंड नाउ इट इज 10 years। हाँ, मैं बता देता हूँ। जी सो मिस्टर काशिफ, देखें, जो रिटेंशन आप जिस फर्म के लिए काम कर रहे हैं ना, उस फर्म का जरूरी है कि आप उसका स्टेटस जो है वो मालूम करें। फॉर एग्जांपल, आप एक फर्म के लिए काम कर रहे हैं और वो क्यूसीआर लिस्टेड है, तो जब वो फर्म अगर क्यूसीआर लिस्टेड है, तो उसे क्यूसीआर फ्रेमवर्क फॉलो करना है। और फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है कि आपके वर्किंग पेपर्स जो हैं वो 10 साल की रिटेंशन पीरियड में लाएंगे। तो आपको अपने वर्किंग पेपर जो है वो 10 साल के लिए रिटेन करने हैं। और अगर आपकी फर्म जो है वो क्यूसीआर रेटेड नहीं है, तो फिर आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट पे जाना है, 5 साल तक भी आप जा सकते हैं। लेकिन चूंकि लोकल लॉस प्रिवेल ओवर दी इंटरनेशनल लॉस, तो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी फर्म अगर तो क्यूसीआर रेटेड है, तो 10 साल की रिटेंशन की रिक्वायरमेंट है। सो काशिफ, आपका आंसर आई थिंक क्लियर हो गया होगा। काशिफ भाई, इसमें मैं मजीद जैसे हमारे जी, मुजम्मिल भाई थैंक यू ने सो मच। ऐड किया, आई एम ग्रेटफुल टू मुजम्मिल भाई एज वेल। इसमें यह कि आपका जो रिटेंशन पीरियड है वो 10 years का है, और इसी को फॉलो किया जा रहा है। बाज़ औक़ात हमें एक कॉमन इशू ये भी नजर आता है कि रिटेंशन पीरियड तो सही फॉलो किया गया है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में गलती है। तो हम ये देखते हैं कि वट एवर इज डॉक्यूमेंटेड इन द ISQM एंड द फाइल्स, और वो अकॉर्डिंगली उसके साथ रिलेट भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच। Thank you, Kashif, for the question. Thank you, Asra, Um, as well. And I think नासिर, Nasir. अदनान भाई, नासिर का जी क्वेश्चन है, आर देयर जी एनी प्लीज। एक्सेल बेस्ड टेम्पलेट वर्किंग फॉर डिफरेंट एफएस आइटम्स अवेलेबल ऑन एनी प्लेटफॉर्म?
देखो नासिर, जो वर्किंग पेपर्स होते हैं ना वो फर्म की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी फर्म में काम कर रहे हैं तो वर्किंग पेपर ना अवेलेबल नहीं होते, लेकिन एनी हाउ अगर आपको कोई स्पेसिफिक वर्किंग पेपर का जिसे कहते हैं प्लेटफॉर्म चाहिए, तो आप चाहे मुझसे कनेक्ट कर जाओ, चाहे अदनान से कनेक्ट कर जाओ, हम जो है वो 5-10 मिनट लगा के आपको स्पेसिफिक उस वर्किंग पेपर के बारे में समझा देंगे। देखो ये ऑडिट क्वालिटी सर्कल का जो पर्पस है ना, ये पर्पस ही यही है कि हमें अपनी कम्युनिटी को देना है। मतलब माशाल्लाह मुझे 12 साल हो गए इस फील्ड में, अदनान भाई को अराउंड 20 साल के करीब इस फील्ड में हो गए, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो ये जो हमने इसका पर्पस रखा है, इसका पर्पस ये है गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, और इस प्रोफेशन को जो है वो आगे लेके जाना। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक एरिया में कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप मुझे मेरे लिंक्डइन पे मैसेज कर दो और अदनान भाई को लिंक्डइन पे मैसेज कर दो, हम जो है वो आपको समझा देंगे। लेकिन कोई टेम्पलेट होना वो हर फर्म की अपनी प्रॉपर्टी है। कोई भी किसी भी फर्म दूसरी फर्म को अपने वर्किंग पेपर्स नहीं देगी। हाँ, चैट जीपीटी आप करोगे तो आपको एक जर्नल जर्नल चीजें मिल जाएंगी, लेकिन वो जर्नल चीजें आपकी ऑडिट के लिए रेलिवेंट नहीं है। सो आई होप नासिर आपका आंसर जो है वो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसमें मैं मुजम्मिल भाई ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस किया है इस क्वेश्चन को नासिर के। अच्छा नासिर भाई, इसमें मैं आपको ये जरूर ऐड कर देता हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि हर फर्म की अपनी एक एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, एक उनकी अपनी दे हैव अ मेथोडोलॉजी जिसको वो फॉलो करते हुए वर्किंग पेपर्स को अलाइन किया हुआ होता है। और जैसे ही आप वहाँ पे जाते हो उनकी टैब्स में, लेकिन नॉर्मली इसमें देखा ये जा रहा होता है कि ऑडिट प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ इट, इंडेक्स इज अ पार्ट ऑफ इट, what audit procedures you have performed, what audit evidence you have obtained, कुछ scanned copies, confirmation agreement और sometimes extracts और alternative audit procedures. So इसका एक basic जो structure skeleton है ना, that is index, then the audit program, then the lead schedule, sub lead schedules, the audit procedures, the audit evidence you obtained, और अगर वो बहुत बड़े बड़े कोई contracts agreements हैं तो उसके agreements। हाँ, हर एरिया के ऊपर जिस तरह मिस्टर मुजम्मिल ने कहा है, तो इंशाल्लाह ताला अगर आप हमें कांटेक्ट करोगे तो हम आपको उसके अकॉर्डिंगली आप उसको गाइड भी कर देंगे। नासिर भाई, आई थिंक इज इट क्लियर? और हमारे साथ हमारे दूसरे भी कुछ साथी हैं, तो अगर किसी को इफ दे हैव एनी क्वेश्चन क्यूरी रिलेटेड टू कॉमन इश्यूज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दे कैन आस्क। सो इसके अलावा भी क्यूरीज है, अगर आप ऑडिट के स्टूडेंट्स हैं, जी, अगर आपका ऑडिट से भी कोई कोई ताल्लुक है, कोई क्यूरी है किसी फर्म में, तो आप पूछ सकते हैं। वी हैव अराउंड 15 मोर मिनट्स कि हम बल्कि मैं जब मुजम्मिल सेशन भाई क्लोज करें। इसमें आपकी इस बात को थोड़ा ऐड ऑन इस तरह कर दूंगा, जैसे कि मुजम्मिल भाई और मैंने ये कंसीव किया ऑडिट क्वालिटी सर्कल्स का, इस पे हमने गोइंग कंसर्न को किया लास्ट एपिसोड, एंड देन दिस इज एपिसोड नंबर 2 कॉमन इश्यूज पे है, वर्किंग पेपर्स पे है। तो जैसे हमारे सीनियर साथी अवैस साहब ने भी ज्वाइन किया है, वी आर रियली ग्रेटफुल, और बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, फ्रेश ब्लड भी है, एक्सपीरियंस भी है। तो अगर आप हमें इनपुट भी दे सकते हैं थ्रू अवर लिंक्डइन पेज के नेक्स्ट हम किस चीज पे लेके आए, जाहिर बात है हम अपनी रिसर्च R&D तो कर रहे होते हैं, जो इश्यूज चल रहे होते हैं, तो आप हमें नेक्स्ट इनपुट दे सकते हैं, नेक्स्ट हम किस टॉपिक पे लेके आए, आपकी कोई क्यूरीज हैं, ताकि हम देखेंगे हम उसको एड्रेस करें, मैं और मुजम्मिल भाई उसके अकॉर्डिंगली प्रेपरेशन करके उस चीज को लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। अवैस भाई, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? इट विल बी एन ऑनर इफ यू कैन ऐड some question, some input suggestion. वैसे अब आप म्यूट हैं, इसी तरह हमारे साथ अब्दुल्ला हैं, बिलाल सॉरी हैं। सॉरी वॉइस, मेरा बच्चा तंग कर रहा था तो मैं 1 मिनट के लिए चले गया था, तो मिस हो गया है। नो नो वरीज मुज़म्मिल भाई, इट्स अ ऑफ डे। सो मैंने अवैस साहब से भी रिक्वेस्ट की है, और बाकी भी साथी हमारे साथ जैसे काशिफ हैं, वकास हैं, नासिर ने पूछ लिया है, असरे हैं, बिलाल, फहद, अब्दुल्ला, ये साथी जो मेरे मेरे सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, कोई ऐड करना चाह रहा है क्वेश्चन, कोई इनपुट देना चाह रहे हैं नेक्स्ट सेशंस के लिए, तो इट विल बी वेलकम फ्रॉम बोथ ऑफ अस इंशाल्लाह। मुजम्मिल भाई, आप अगर किसी क्यूरी को, जो अभी तक क्यूरी है उसको फर्दर ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, अदरवाइज आई थिंक देर इज नो फर्दर क्वेश्चन, कोई क्यूरीज में भी नहीं आ रहा, तो हम इसको फिर रैप अप भी कर सकते हैं। अच्छा सर, ये मुजम्मिल भी एक और क्वेश्चन आया है नासिर की तरफ से, सर काइंडली अरेंज अ सेशन ऑन सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स ऑडिट इफ पॉसिबल। मुजम्मिल भी इसको नोट डाउन कर लेते हैं, हमारे पार्टिसिपेंट की तरफ से एक मैसेज आ रहा है, हम्म, और मैसेजेस को भी हम कंपाइल कर लेते हैं एंड ऑफ द सेशन इंशाल्लाह। ठीक है। और फिर जो है वो हम विद इन दी नेक्स्ट वीक अपना नेक्स्ट सेशन के बारे में सबको बता देंगे। लेकिन सही है नासिर, आपका क्वेश्चन आ गया है, तो हमारे माइंड में भी था कि हम जो है ना इफेक्टिव ऑडिट वर्किंग पेपर्स, इनकम टैक्स और सेल टैक्स के बारे में बताएं। कॉमन एरिया है ये, जिसके अंदर काफी जिसे कहते हैं ये शॉर्ट कमिंग्स हैं। तो आपका बिल्कुल जो सवाल वैलिड है,
तो इसको जो है ना हम कंसिडर करेंगे और बहुत जल्दी जो है एक सेशन इसके ऊपर जो है वो हम ड्राफ्ट करते हैं इंशाल्लाह। इनके क्वेश्चन को मैं जरा रीफ्रेस कर देता हूँ, जो मैं इनके क्वेश्चन को हम्म। समझ पा रहा हूँ। बेसिकली जो सेल्स टैक्स का एरिया हम बना रहे होते हैं ऑडिट फाइल में, और जो हम्म। इनकम टैक्स का एरिया बना रहे होते हैं, जैसे हम रिकंसिलिएशंस ले रहे होते हैं, रिटर्न्स हम्म। से डाटा ले रहे होते हैं, और वो सारी चीजें एडवांस टैक्सेशन के ऊपर, हम्म। मिनिमम टैक्सेशन के ऊपर, हम्म। सुपर टैक्स एंड वट एवर सारी चीजें, हम्म। वो हमें क्या क्या होनी चाहिए इसके अंदर बेसिकली। इस एरिया को भी हम एड्रेस करेंगे, हम इसको अपनी कंसिडरेशन में लेके आते हैं। और मुजम्मिल भाई, आई थिंक नो मोर क्वेश्चंस, सो नहीं, विद योर चैट में परमिशन। अब्दुल्ला अब्दुल्ला अयाज और अच्छा, नो नासिर प्रॉब्लम। टाइप अवैध कर। साहब ने अभी थोड़ा सा कहा कि उनका शायद माइक लॉक था। आई थिंक इनको कहीं हमारे एंड पे तो म्यूट नहीं है, शायद मैं देख लेता हूँ। नहीं, मेरा नहीं नहीं, कहा। हमारे एंड पे अवै- म्यूट नहीं है, अवैध पार्टिसिपेंट्स साहब, बोल अगर सकते आपके हैं। माइक में कोई इशू आ रहा है तो आप काइंडली बेशक चैट बॉक्स में अपना क्यूरी लिख सकते हैं। आई थिंक उनका माइक लॉक्ड है, कोई टेक्निकल उनको वहां पे इशू है, तो हाँ, आप कोई सर मसला क्यूरी नहीं लिख है। सकते हैं। और हमारे साथ जितने भी साथी हैं, इफ दे हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, वी कैन वेट फॉर नेक्स्ट 5 minutes, देन विद द परमिशन ऑफ मुजम्मिल भाई वी विल रैप इट अप हम्म। इंशाल्लाह। जी मुजम्मिल भाई, यू वांट टू ऐड समथिंग? चैट में कुछ पार्टिसिपेंट्स लिख रहे हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि उनकी चैट का जो है वो लिख लें, तो उस पर हम बात करें फिर। ओके मुजम्मिल भाई, ओके ओके। सो अवैध साहब का मैसेज आया है। माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वर्किंग पेपर्स विदाउट ऑडिट सॉफ्टवेयर। सो अवैध साहब, इस पर मैं आपको जवाब ये दे दूं कि आपको अपनी क्लाइंट की कैटेगरी देखनी है। पाकिस्तान के अंदर थर्ड शेड्यूल में 4 कैटेगरी के क्लाइंट्स हैं। तो पहली कैटेगरी है पीआईसी, दूसरी कैटेगरी है लार्ज साइज कंपनी, तीसरी है मीडियम साइज और चौथी है स्मॉल साइज। तो भले आप किसी भी फर्म में हो, पाकिस्तान में 128 130 जितनी फर्म है, अगर तो वो पीआईसी की ऑडिट कर रही है, तो पीआईसी के ऑडिट के लिए मैंडेटरी है आपके पास जो है वो सॉफ्टवेयर होना। तो आप पीआईसी विदाउट ऑडिट सॉफ्टवेयर कर ही नहीं सकते। ये लोकल लॉ की रिक्वायरमेंट है। अब बात आती है बाकी की 3 कैटेगरीज, लार्ज साइज कंपनी, मीडियम साइज कंपनी, स्मॉल साइज कंपनी। इसके लिए अभी आईकैप की तरफ से मैंडेटरी नहीं है। तो चूंकि आईकैप की तरफ से मैंडेटरी नहीं है, तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो उसको सॉफ्टवेयर पे कर लें, और आप चाहें तो उसको वर्किंग पेपर में कर लें। अभी आईकैप का एक और जो है नोटिफिकेशन आया है कि जो लार्ज साइज कंपनी है वो जून 2027 से जो है उसके लिए भी मैंडेटरी है। लेकिन अभी लार्ज साइज कंपनी आज की तारीख में आप उसको जो है वो वर्किंग पेपर में कर सकते हैं। अब आपका सवाल कि करेंगे किस तरह, तो उसमें आपको वर्किंग पेपर एक्सेल में बनाने होंगे या वर्ड में बनाने होंगे। फिर उसको आपको अपने सर्वर पर रखना होगा, और फिर जो है आप इस तरह से ऑडिट वर्किंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी, आप चाहें तो उसको जो एक्सेल पे बना लें, आप चाहें तो उसको वर्ड पे बना लें। लेकिन चूंकि एज ए 230 की रिक्वायरमेंट आर्काइविंग की, तो आपको 60 दिन में इसको प्रॉपरली आर्काइव करना पड़ेगा। चाहे तो आप बॉक्स फाइल में प्रिंट देके उसको आर्काइव कर लें, चाहे तो आप एक कोई छोटा सा सर्वर खरीद लें और सर्वर में जो है उसको आर्काइव कर लें। लेकिन दूसरी चीज आपको ये भी इंश्योर करनी है कि आफ्टर 60 डेज ऑफ आर्काइविंग उन वर्किंग पेपर में कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी चेक ना हो। अगर तो उन वर्किंग पेपर में कोई अमेंडमेंट आती है, तो इट्स अ मेजर नॉन कंप्लायंस। सो अवैध साहब, आई थिंक आई आंसर योर क्वेश्चन। अदनान भी, अगर आपको कुछ ऐड करना हो जी इसमें जी, तो आप ऐड मैं कर बस लें। इसमें ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि मुजम्मिल भाई ने बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस कर दिया, और नेचर ऑफ एंगेजमेंट्स भी बता दिए। तो इसमें फिर वही यही है कि अगर तो पीआईसी नहीं है, अगर पीआईसी है तो उसमें तो एक रिक्वायरमेंट लॉ की आ गई। पीआईसी की नहीं है तो फिर आप उसमें
वही मैनुअल फाइल्स को ही इस्टेब्लिश कर रहे होंगे थ्रू, आप उसके डॉक्यूमेंटेशन वर्ड के थ्रू कर रहे हैं, एक्सेल के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपको पता है कि फर्म टू फर्म वेरी कर रहा है। लेकिन मैंने जैसे एक बेसिक स्केलेटन की बात की थी कि वहां पे भी भले आप मैनुअल में कर रहे हैं, भले सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, लेकिन ऑडिट प्रोग्राम उससे पहले इंडेक्सेस, आपके रीड स्केजुअल, सब स्केजुअल्स, एंड देन आपके वर्किंग पेपर्स, कोई आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है, कोई ऑडिट एविडेंस है, और ये सारी चीजें जो है वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैनुअल फाइल में एक और चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रोल पर्पस एंड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन इज द इंडेक्सिंग एंड द क्रॉस रेफरेंसिंग। जो आपकी रेफरेंसिंग है, क्रॉस रेफरेंसिंग है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वैसे आपका एक और क्वेश्चन आ रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑडिट सॉफ्टवेयर फॉर द पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ ऑडिटर वर्किंग पेपर्स। जी मुजम्मिल भाई। देखिए अवैध साहब, ये जो आपको क्वेश्चन है ना, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑडिट सॉफ्टवेयर फॉर द पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स। देखें, हम्म। ये आप स्टैंडर्डाइज अवैध साहब कर नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करें पीडब्ल्यूसी की तो उनके पास और है, और अगर आप बात करें ईवाई की तो उनके पास जो है वो कैनवस है, और अगर आप बात करें बीडीओ की तो उनके पास एपीटी है। तो बिग फोर और जो बिग टेन है, बिग फोर बिग टेन के पास जो है वो अपने अपने सॉफ्टवेयर है। जब अपने अपने सॉफ्टवेयर है तो उनकी अपनी अपनी ई ऑडिट्स की रिक्वायरमेंट है। अब बात आ जाती है छोटी ऑडिट फर्म्स की, तो छोटी ऑडिट फर्म के अंदर आपके पास ई ऑडिट भी है, स्मार्ट ऑडिट भी है। तो इसके ये डिपेंड करता है फर्म के ऊपर। फर्म चाहे तो वो अपना इन हाउस बना ले, फर्म चाहे तो वो बाहर से परचेज कर ले, ठीक है। ये फर्म की अपनी मर्जी है। लेकिन चूंकि आप जब पीआईसी की ऑडिट कर रहे हैं, तो किसी भी फॉर्म का हो, किसी भी मोड का हो, लेकिन पीआईसी की वर्किंग पेपर्स जो है वो आपको रखना सॉफ्टवेयर के ऊपर ही है। हम्म। ये कह रहे हैं बेंचमार्क। अगेन अपना वैसा बेंचमार्क आप कर नहीं सकते ना। ये हर 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 अपनी हर फर्म की अपनी मर्जी है। ये हर फर्म की अपनी मर्जी है, वो अपने कॉस्ट को देखते हुए, अपने रिसोर्सेज को देखते हुए कर सकती है। हाँ, अगर आप बेंचमार्क के लिए चाह रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर एक एक चल रहा है स्मार्ट स्मार्ट ऑडिट, और स्मार्ट ऑडिट के अलावा कैशवेयर। तो आप इनसे जो है चीजें ले सकते हैं, लेकिन अगेन वो भी जो है वो टेलर होगा, और वो भी डिपेंड करेगा फर्म के साइज के ऊपर। इसमें मैं मुजम्मिल भाई की बात में वैसे एक चीज ऐड कर सकता हूँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम वी आर नॉट, अगर हम उसके जो बिग फोर या टॉप 10 की अगर बात ना भी करें, विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह के सॉफ्टवेयर जैसे मुजम्मिल भाई ने डिस्कस किया, इवॉल्व होता जाएगा, और एक खास हद तक हम कस्टमाइजेशन या बेंचमार्क हम्म। सेट कर लेंगे। आप 60% कह लें, 70% कह लें, हम्म। बाकी हर फर्म का फर्म टू फर्म भी उसकी एक मेथोडोलॉजी होती हम्म। है जिसके ऊपर वर्किंग पेपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। और वैसा आपका एक और चीज था कि विदाउट ऑडिट सॉफ्टवेयर, तो उस पर अदनान भाई ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया, मैंने भी डिस्कस किया। एक और क्वेश्चन बस इसके ऊपर मैं आपको ये चीज बता दूं कि जब भी आप ऑडिट वर्किंग पेपर साइन करेंगे हार्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है, जिस दिन भी साइन करें वो साइनिंग के बाद आपके पास 60 डेज होंगे। तो आपको 60 डेज में उसको आर्काइव करना है। ठीक है, ये आपको आर्काइव लाजमी करना है 60 डेज के अंदर। अगर तो आप इसको 60 डेज में आर्काइव नहीं करते, सो इट्स अगेन अ सीरियस नॉन कंप्लायंस। अब आर्काइविंग की आपकी मर्जी है, आप चाहें तो वर्ड की फाइल का और एक्सेल की फाइल का प्रिंट देके बॉक्स फाइल में लगा के उसको अपने स्टोर रूम में रख दें। आप चाहें तो आप एक सर्वर परचेज कर लें जो कि बहुत सस्ता मिलता है, उस सर्वर पे रख दें। तो लेकिन ये इंश्योर आप करेंगे कि साइनिंग के 60 दिन के बाद उस वर्किंग पेपर में कोई चेंज ना आए, भले से वो जो है वो ऑडिट सॉफ्टवेयर में ना हो। अगर तो उसमें चेंज आता है, और वो चेंज अगर तो कोई रेगुलेटर आइडेंटिफाई करे, तो फिर नॉन कंप्लायंस है। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन पार्टिसिपेंट्स? और इन 3 मिनट्स टाइम वी विल बी क्लोजिंग दिस सेशन। 4:27 हो रहे हैं, 4:30 पे हम क्लोज करेंगे। तो अगर तो कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम 3 मिनट्स के बाद इसको जो है वो क्लोज कर देंगे। अगर तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे, मैं और अदनान भाई बैठे हुए हैं आपको आंसर देने के लिए। आई थिंक मुजम्मिल भी अब्दुल्ला अयाज शायद क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। अब्दुल्ला अयाज, डू यू हैव एनी हाँ क्वेश्चन? जी अब्दुल्ला। Am I audible? जी जी, यू आर ऑडिबल, यस यू अब्दुल्ला। कैन आस्क क्वेश्चन। First off, sir, thank you so much. This was really interesting. और सर सेकेंडली मेरे बेसिकली एक आप लोगों से एक एक्सपर्टीज चाहिए थी, सॉर्ट ऑफ एडवाइस। थोड़ा सा सर, क्योंकि जब कंप्लायंस की बात की तो आई नोटिस कि डेफिशिएंसी बेस्ड जो चेकलिस्ट होती है, हम डॉक्यूमेंट नॉर्मली बनाते हैं चेकलिस्ट जिसमें टाई एंड टिक करना होता है, टिक एंड टाई फीचर होता है नॉर्मली।
तो उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं यूजुअली, बिकॉज इट्स जस्ट शोज कि ये डॉक्यूमेंट लिए, यानी कि जो भी आपने चेकलिस्ट बनाई है ये एक्यूरेटली मैथ हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, इट्स जस्ट बेसिकली चेकलिस्ट ना। तो आई नोटिस कि उसमें जो अब हिस्टोरिकली जब आप उसको जज कर रहे होते तो उसमें, क्योंकि एक चीज़ का ब्रिज डॉक्यूमेंट नहीं कहते जिसे हम रेफरेंसेस कह सकते हैं, उसमें प्रोफेशनल जजमेंट आपको अक्सर नज़र नहीं आती। और मोस्टली मैंने देखा स्मॉल जो फर्म्स होती हैं उनकी प्रैक्टिस में ये चीज़ मिसिंग होती है। तो हाउ कैन वी डू दैट कि जिससे हमारा एक ब्रिज डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए और एक बेटर तरीके से हम प्रोफेशनल जजमेंट भी देख सकें उस चेकलिस्ट के अंदर। योर क्वेश्चन इज जबरदस्त, वेरी वंडरफुल। अब आप मेरी बात सुनो, देखो हर चीज आप उस चेकलिस्ट में डालें, तो आप एक काम ये करो, उस चेकलिस्ट के अंदर सिर्फ एक हेडिंग डाल लो, जजमेंट्स इन्वॉल्व। और फॉर एग्जांपल अगर जजमेंट इन्वॉल्व, फॉर एग्जांपल जो है वो इम्पेयरमेंट पे है, किसकी इम्पेयरमेंट है, इन्वेस्टमेंट की, तो वहां पे लिख दो कि इन्वेस्टमेंट, और वहां पे जाके उसका वर्किंग पेपर रेफरेंस दे दो। किसी को भी देखना होगा तो वो उस वर्किंग पेपर रेफरेंस में जाएगा और जाके चेक कर लेगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैं चेंज करता हूँ, अगर कोई जजमेंट इन्वॉल्व है IS 19 की ग्रेजुएटी एक्सपर्ट पे, तो आप वहां पे सिर्फ IS 19 का रेफरेंस दो, और किसी को भी जाके चेक करना है तो वहां जाके चेक कर लेगा। अच्छा, मैं मुजम्मिल भाई की बात में उन्होंने अच्छा कॉम्प्रिहेंसिवली जवाब दिया है। अब्दुल्ला, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि चेकलिस्ट को, इससे पहले भी हमारे एक साथी ने चेकलिस्ट के ऊपर ही सवाल किया था, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स की। आप कोई भी चेकलिस्ट की बात कर लो तो आप उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो एक कॉलम, आप उसके अंदर रेफरेंस ऐड करो जिस स्पेसिफिक एरिया में वो काम किया गया, जहां पे हमने उस जजमेंट को, ऑडिटर ने एक जजमेंट की है, वहां उसको कंक्लूड किया है, उससे डॉक्यूमेंट करके हम रिलेट करें। सेल्स पे काम कर रहे हैं, सेल्स टैक्स पे काम कर रहे हैं, इनकम टैक्सेस पे काम कर रहे हैं, आप ECL पे काम कर रहे हैं, आप लीजेस पे काम कर रहे हैं, आप कोई भी चेकलिस्ट बना रहे हैं, उसका पर्टिकुलर कोई भी वहां पे क्वेश्चन क्यूरी आया है, क्योंकि चेकलिस्ट क्वेश्चन आर लाइक यस नो नॉट एप्लीकेबल। अगर यस है या नॉट एप्लीकेबल है, हम्म। कोई कॉम्प्लेक्स जजमेंट है, आप उस एरिया का उस स्पेसिफिक वर्किंग पेपर हम्म। को रेफर करें जहां पे आपने वो कंक्लूड किया है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ ये देखा है कि हमारे वर्किंग पेपर में हम्म। जो हम लोग चीज लैक करते हैं, हम उस चीज को कंक्लूड नहीं करते। वट एवर द हम्म। कंक्लूजन वॉज शुड बी डॉक्यूमेंटेड। तो आप चेकलिस्ट को भी उन कंक्लूजन्स के परफेक्ट। साथ, उन वर्किंग्स के साथ, उन प्रोसीजर्स के साथ, उन एविडेंसेस के साथ रेफर कर सकते हैं। अदनान, इसमें मैं मजीद ऐड करूंगा, जिस तरह जी। अब्दुल्ला का क्वेश्चन है और बड़ा वैलिड वैलिड क्वेश्चन है। जी। और देखो अदनान अदनान भाई, इसके ऊपर आप ये समझें, अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि मैंने जो है बिग फोर में तकरीबन कोई 10-11 साल काम किया है ना, तो जो अच्छी बिग फोर जो फर्म से मैं नाम नहीं कोट करूंगा, वो जब कंप्लीशन कर रही होती है ना, तो वो अपना समरी रिव्यू मेमोरेंडम बना रही होती है। हम्म। इस समरी रिव्यू मेमोरेंडम में ये होता है कि जितने भी जजमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, जितने भी एस्टिमेट्स होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वालिफिकेशन आ रही है और फॉर एग्जांपल कोई कैम आ रहा है, तो उसको वो डॉक्यूमेंट करते हैं। तो ये आप लोग प्रैक्टिस बनाओ, चाहे आप छोटी फर्म में हो, चाहे आप बड़ी फर्म में हो। छोटी बड़ी फर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है प्रैक्टिस से। तो आप ये प्रैक्टिस बनाओ कि जो भी आपने जजमेंट्स लिए हैं या जो भी आपने एस्टिमेट्स लिए हैं, या इसके अलावा अगर तो आपने आया कोई क्वालिफिकेशन दी है, आया अगर आपने कोई जो है वो कैम दिया है, आया आपने कोई एम्फेसिस दिया है, तो इसको अपने कंप्लीशन स्टेज में समरी रिव्यू मेमोरेंडम के नाम से इसको आप जो है वो डॉक्यूमेंट करें। अगेन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये बिग फोर के मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जिन दो बिग फोर में मैंने काम किया था वो बनाते थे। तो मेरी भी आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह से इसको डॉक्यूमेंट करोगे तो ये आपके आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है कभी भी मिस नहीं होगी। और जहां तक बात रही चेकलिस्ट अप्रोच की, तो देखो आइजा 315 जो है वो चेकलिस्ट अप्रोच से हट चुका है। माशाल्लाह आप लोग स्टूडेंट्स हो गए या करंटली आप ऑडिट पढ़ लोगे या पढ़ोगे, तो इंशाल्लाह आपको मालूम चलेगा एज ए 315 अब रिस्क बेस पे आ गया। पुराना एज था चेकलिस्ट बेस पे, लेकिन अब रिस्क बेस पे आ गया। तो इंशाल्लाह मैं और अदनान भाई जो है एक प्लान करेंगे कि आप लोगों के लिए एज ए 315 की भी 45 मिनट्स टू 1 आवर की ट्रेनिंग लिया है। सो अब्दुल्ला, आई थिंक आपको जो है वो जवाब मिल गया होगा। जी, जी सर, क्लियर है, क्योंकि सर वो प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, हेफ्टी हम्म। हो जाते हैं, समरीज़ अपॉन समरीज़। देन वो हम्म। जब एक रीडेबल अप्रोच होती है तो उस टाइम बड़ा बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि दिस डॉक्यूमेंट हैज़ मल्टीपल सबसेक्शंस, उसके भी सबसेक्शंस बने हुए हैं। देन वो रीड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको मोर एफिशिएंटली मैं वो एडवाइस कर रहा था हम कैसे करें। तो समरी इज़ द प्रोबेबल सॉल्यूशन, एक और समरी इसी तरह। समरी रिव्यू थैंक यू। मेमोरेंडम। अब्दुल्ला, अगर आप इसको सर्च करोगे ना, तो इस ये आपको जो है ना, आप इसको जरा सर्च करो, चैट जीपीटी करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बात किस चीज़ की करना चाह रहा हूँ। ऑन दिस कॉल मैं बता नहीं सकता, क्योंकि देखो फिर जो है कॉपीराइट्स का भी इशू आता है, लेकिन मैंने आपको एक हिंट दी है।
तो आप इसको सर्च करो, या अगेन आप मुझसे 1-to-1 फोन कॉल कर लेना, तो मैं आपको फोन कॉल पे समझा दूंगा कि इसको प्रिपेयर किस तरह से करते हैं। नहीं नहीं, थैंक यू सर, आई थिंक आई गेट इट, क्योंकि शायद मैंने इस चीज़ को हम्म, पहले नोट किया कहीं पे एंड प्रैक्टिस में भी किया हुआ। थैंक यू। थैंक यू जबरदस्त। मतलब, थैंक यू। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट्स अगर तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम जो है वो इसको कॉल को अपने एंड करते हैं। आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी ज्वाइन किया है वो अपना फीडबैक चैट पे छोड़ दें, ताकि हम जो है मजीद बेहतरी की तरफ आ सकें। थैंक यू गाइस। तो आप लोग अपना बस फीडबैक चैट पे जो है वो छोड़ें, फिर मैं इस कॉल को एंड करता हूँ। इंशाल्लाह हम जो है फिर वो जल्द मिलेंगे। थैंक यू गाइस। Thank you very much, all the participants. Thank you, Muzammil bhai. Thank you all of you. And inshallah, we will come up with our next episode, episode number 3. और आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं और जितने भी आइडियाज हैं, इनपुट हम उसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। थैंक यू मुजामिल भाई। थैंक यू गाइस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टेक केयर ऑल ऑफ यू।